Hello students, today we will be doing Lagrange multiplier and applied optimization problems, and this is the last video on application of partial derivatives. Lagrange multiplier. Let us first see what is Lagrange multiplier. Suppose we have been given a function that is z is equal to a function of x and y in terms of x and y, right? This function has two variables, right? This function has two variables x and y, and what is our objective? Our objective is to maximize or minimize it, right? But this function is subject to a single constraint. And there is a single constraint which is given, which is this function, which is also in terms of x and y, but this is given is equal to 0. This constraint is given, which is a function of x and y, is given equal to 0. It means we are dealing with Lagrange multiplier, which has two variables x and y, and which is subject to a single constraint, which is also in terms of x and y, and which is equal to 0. Right? Over here, when we are given these two functions, one is the original and the second one is the constraint function. Right, and our objective is to either maximize or minimize it, depends what the question is asking for. So we introduce a new variable, that is lambda. We introduce a new variable lambda, and then we write a new function, right? This lambda is known as Lagrange multiplier. And when we introduce this lambda, then we construct a function. This function will be a function of three variables. Right, this will be in terms of x, y, and lambda. This is the new function. This will be written. This is equal to, right, the original function in terms of x and y minus. Then it will be lambda, right, the new variable, and this is the function which is the constraint function. Right. Let us now see what are the steps of minimizing or maximizing it, right? See, the first step is you have to construct a new function f. You have to remember this f, which is of three variables, and it is defined by, as I already told you, the original function, right? You have to write first, and then this is minus lambda, and then the constant function, right? Then step 2 is you have to find out the partial derivatives of this function f, right? Partial derivative of f, you have to remember this, the new function, partial derivative of the new function, right? And you have to set them equal to 0. Now there are three variables, so you have to derive three partial derivatives. First, with respect to x, you put that equal to 0. Second, with respect to y, you put that equal to 0. And third, with respect to lambda, you put that equal to 0. Now you have found three partial derivatives over here. Now our objective in the second step, what you will do, you will solve the resulting system for x, y, and lambda. You have to find out the values of x, y, and lambda, right? Now, one thing to be noted that the method of Lagrange multiplier simply gives the necessary conditions for optimizing the function, right? Optimizing the function, the original function, which is subject to a constant, right? Which is also a function of x and y, and this is equal to 0. Now, this simply gives you the necessary conditions, right? Now, for sufficient condition, we have step 4, right? Step 4, which is known as bordered Hessian determinant. It means in step 4, you have to find the determinant. Now, determinant of what you have to find? That is the question, right? Now, how will you form the determinant? You have to form the determinant. First, you have to write this as 0. Then this will be gx and gy. What is this gx and gy? This is the derivative with respect to x. Right? You will find what you will do. You have to find the derivative of with respect to x from the constraint function.
this from the constraint function with respect to x, and again then with respect to y with the constraint function. Over here you will do the same thing over here, right? Gx and then gy. Then what you have to do, you have the new function, right? You have already calculated the first derivative with respect to x. You need to differentiate this again. This will be fxx, right? Now you have to find fyy with respect to y. So you need to differentiate this function again with respect to y, right? And then this is fxy. This is also the same. This is also fxy, right? Now you need to differentiate this with respect to y, right? If you differentiate this also with respect to x, you get the same result, right? Now, whether the function is a positive, whether the function is a maximum function or a minimum function depends whether your this Hessian determinant is positive or negative. Now, if you get the value Hessian determinant is positive, the function is maximum. If you get the value as negative, the function is a minimum function. So we have 4 steps over here. This is step 1, you construct the new function. This is step 2, you find out the partial derivatives and put them equal to 0 and find the free variables x, y and lambda. Then what you do? Then you form the determinant, you find out the value, and fourthly you conclude whether it is a maximum or a minimum function, right? Now we move to the this is the question, right? This is use the method of Lagrange multiplier to find the maximum value of Lagrange multiplier to find the maximum value of this is the function given to you, the original function in terms of x and y. F of xy is equal to xy, the constraint function which is also in terms of x and y. This is x plus y minus 1000 is equal to 0. This is equal to 0. You have to remember this. Minus 1000 is equal to 0. Now, first step will be we construct the new function, that is f. We need to construct f. You know, it is a function of 3 variables x, y and lambda. So this will be, as we've already done this, the original function minus lambda into the constraint function. This is xy, you know it. We wrote here minus lambda and we wrote here the constraint function x plus y minus 1000. This is as it is xy. We multiply here, take these out of the bracket. This will be minus lambda x, right? This will be minus lambda y. This will be minus minus. This will become plus 1000 lambda. Second is a necessary condition, right? You have to find the partial derivatives with respect to x. Now, from the new function fx, what will be with respect to x? So this will be only y minus lambda. This will become y and this will be lambda, right? This will be 0, this will be also 0. Now fy will be x. See, this is x and this will be 0, this will be minus lambda. This is x minus lambda. Now f lambda with respect to lambda. Lambda we have over here, so this will become minus x. This is minus of lambda we have over here. This becomes minus y and this is 1000 plus 1000. Now this is, we need to put them equal to 0. Y minus lambda is equal to 0. What you get? Y is equal to lambda, right? Then you put this equal to 0, right? X minus lambda is equal to 0. Then this is x is equal to lambda. Y is equal to lambda. X is equal to lambda. So you can conclude that x is equal to y, right? We got the values. Whatever values we have got, right? We substitute this value in the third equation. That is in this equation. Right, now we have this equation minus x minus y plus
1000 is equal to 0, and we know that x is equal to y. So minus x minus y plus 1000 is equal to 0. So this is minus x. Y is also equal to x. So minus x. This is, you take this, that side is become minus 1000, right? This will be minus 2x minus x minus x. This is minus 1000. You get the value as x is equal to 500, right? So we got x is equal to 500. We have got the values of x is equal to 500 and x is equal to y. So y is also equal to 500, right? Okay. So but we got the value of x and y is equal to 500, but we need to prove the second order condition for maximization. So we need to find out the Hessian determinant, right? This determinant we have already discussed which values are to be placed where, right? So we need to find out the value of gx and gy, right? Over here also gx and gy, and these values as such. Let us find the first derivative of the constraint function with respect to x and with respect to y, right? So this becomes 1 and these becomes 0 because they will be treated as constant. This is y, this becomes 1 and these become 0. So this is also 1. Now this was the new function, right? By introducing the lambda variable, we found out that fx was y minus lambda. We need to find out again the derivative of this with respect to x, that is fxx, that is equal to 0 because they all be treated as constant, right? Now fy, this is x minus lambda. Again we differentiate this with respect to y. This is also equal to 0 because these both will be treated as constant. Now fxy, it means we need to differentiate this function, this one with respect to y, and this here we have y, that becomes 1 and lambda becomes 0, so this becomes 1. So we put the values over here. We got 0, we got over here 1 1, put the values 1 1, this side 1 1, right? Fx was 0, fx was 0, fy was 0. So we put this 0, this was 1 1, and we find the determinant of this, that comes out to be 2, which is greater than 0. Thus we see that the second order condition is satisfied and the function, the original function, is maximum when x is equal to 500 and y is equal to 500. Now we need to find out the maximum value. We put the values in the original function. The original function was x into y. So 500 into 500, that becomes 2,50,000. Okay. This is our next question. A producer desires to minimize his cost, right, of production. What is the function given to us? C is equal to 2L plus 5K, right, where L and K are inputs, labor or capital inputs there, right? What is the constraint function? Production function is the constraint function, that is Q is equal to LK, right? This production function, it means Q is equal to LK, and it's given that what you have to do using Lagrange Multiplier method, find the optimum combination of inputs if the total output is 40 units. So this is the constraint. The total output is 40 units. It means L K is equal to 40, right? This is equal to 40. So this becomes LK minus 40 is equal to 0. We can write this in this way because आपको constraint function is equal to 0 लिखना है. This question has come in Delhi University BCom Honors
2010. Now this is the original function 2L plus 5K. This is the constraint function Lk minus 40 is equal to 0. We write the Lagrangian function in terms and we include a new variable lambda. This is the new function is in terms of three variables, right? This is L, K and lambda. Now we write the original function first, that is 2L plus 5K. We minus lambda and then we write the constraint function, that is Lk minus 40. This is the function. Then what we do? Open the brackets. 2L plus 5K. This will be minus lambda Lk. This will be minus plus 40 lambda. We got this. We come to the necessary conditions for optimization. We get the partial derivatives. Fl with respect to labor. We have to differentiate this function, the new function. So this will be 2, right? And this will be minus lambda k, right? We put this equal to 0 as you all know. Then again we find with respect to capital के respect में ये हो जाएगा 5, right? 5 and this will be minus lambda L. Put this equal to 0. Now with respect to lambda के respect में करेंगे तो minus Lk हो जाएगा ये plus 40 हो जाएगा. Minus Lk plus 40 is equal to 0. It means Lk is equal to 40. Right? Now we have put all these equations is equal to 0. Our next step is to find the values of L, labor, capital and lambda. Now this is 2 is equal to lambda k from here, right? So we get lambda is equal to 2 by k. From this equation we know that 5 is equal to lambda L and lambda is equal to 5 by L, right? So you find lambda is equal to 2 by k and lambda is equal to 5 by L. So lambda is equal to 2 by k is equal to 5 by L. Over here we get a relation, that is 2L is equal to 5k. Twice of labor is equal to 5 times capital. We take out the values. L is equal to 5 by 2k. Right? This is what it is. What we need to do? We got this. We need to put this in the third equation in order to derive the values of k. Fine? Similarly, we'll find L and lambda. The third equation is Lk is equal to 40. Lk is equal to 40. We know L is equal to 5 by 2k. L is equal to 5 by 2k into k. We get this as k square is equal to 40 into 2 by 5. We cancel this. We get k square is equal to 16 and k का value कितना हुआ? Square root of 16, 4. We got the value of k. अब हम इसको we got the value of k, right? ठीक है? Now we need to get the value of L. हमें L की value पता करनी है, right? We know Lk is equal to 40, right? Lk is equal to 40. K का value हमें 4 मिला है, तो L की value क्या हो जाएगी? 10. So now L is equal to 10, right? We need to find out the value of lambda, right? From here also 2 is equal to lambda k, right? 2 is equal to lambda k. Lambda is equal to lambda, right? And then k is our 4. Lambda 4 है, 4 डाला हमने, तो lambda की value क्या हो जाएगी? 2 by 4. That comes out to be half. Now what is the second order sufficient condition for minimization? Because we have to minimize the cost. We will not maximize the cost. This is cost of production, so we will minimize it. If it is profit, we will maximize it. As you know, this is our Hessian determinant, right? So minimization, it should be negative.
For this, we have to find out the values of the constraint function. We have to differentiate it with respect to L and with respect to K, right? और जो न्यू फंक्शन है उसको हम with respect to एक बार L डिफरेंशिएट करेंगे, with respect to फिर से एक बार K डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, and again we have discussed this, right? Now let us see. Now we have the function, the constant function, that is Lk minus 40, right? Fine. So we have to find out with respect to L. So this will be K. This we get as K because this is a constant. This becomes 0. With respect to K, we get is equal to L. Now with respect to second order derivative with respect to L, so our FL was, what was our FL? This was our FL. This we need to get this FLL. This will be 0. We need to get FKK. It means again we need to differentiate with respect to K. So this becomes my 0, right? Now we have FLK. FL जो होगा उसको with respect to K differentiate करेंगे, with respect to K करेंगे तो ये minus lambda आएगा. See over here, we get minus lambda. Now put the values. K का value 4 था, 4 डाला. L का value is equal to 10, right? So lambda, this becomes minus lambda. FLK, that is minus lambda. Now write the Hessian determinant. Put the values. This will be 0. This will be GL4, GK10, 4 10 इधर लिखा हमने, and हमारा ये FLL 0 है, ये मेरा FKK 0 है, और ये दोनों minus half है. You solve it, you get minus 40. Minus 40 is less than 0, so cost is minimized over here, right? So cost is minimized over here. This is our next topic, applied optimization problems. This section is concerned with the applications of maxima and minima of two variables to applied business problems. For example, एक firm है जो दो types of products produce कर रही है, and it is interested in to find out the number of units produced of each type in order to minimize the total joint cost. Similarly, एक monopolist है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहा है, राइट? एक ही प्रोडक्ट को दो डिफरेंट मार्केट्स में वो दो डिफरेंट प्राइसेस पे बेच रहा है. सो ही माइट बी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्राइसेस जो चार्ज किया जाए, राइट, ताकि उसका टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. सो बेसिकली इट हैज एप्लीकेशंस with respect to finding the maximum and the minimum. Maximum profit, it can be, or it can be minimum cost. Let us look at the first question, that is the joint cost of a firm producing two products is given by the firm जो है वो दो products produce कर रही है. आपको question को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है. Two products और joint cost है, right? This is the cost function given है. This is equal to 6x square minus 9x minus 3xy minus 7y plus 5y square plus 20, right? जहाँ पर x और y आपका क्या है, यूनिट्स है. आपको क्या पता करना है, x एंड y, ताकि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है, टोटल कॉस्ट है, वो मिनिमाइज हो जाए. कितना यूनिट्स x एंड y का प्रोड्यूस होगा तो क्या आपका टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा. लेट अस कम, हाउ विल बी प्रोसीड. कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपको, राइट? लेट अस फाइंड डेल्टा c बाई डेल्टा x. दिस विल बी 12x माइनस 9 हो जाएगा माइनस 3y
we have to put this equal to 0, right? Now again we find with respect to y. We have two variables x and y. We have two type of product, that is x and y. With respect to y हम इसको करते हैं -3x हो जाएगा, ये -7 होगा और ये 10y होगा। हम इसको दोनों ही इक्वेशंस को 0 के बराबर पुट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? We need to solve these two equations to get the values of x and y. Fine. Simultaneous equation बन गया है हमारा 12x minus 3y is equal to 9, and this becomes my 3x minus 10y is equal to -7, right? When you solve this equation, you get this is 12x minus 3y is equal to 9, and again this becomes, you multiply this by 4 so that कोई एक आपका सेम आ जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए। मैंने यहाँ पे x को कैंसिल करने का कोशिश किया है। This becomes 12x minus 40y minus 28. Your answer is 37. Y is equal to 37. You get y is equal to 1. आपको y का वैल्यू मिल गया। Now what is the step? You need to also find the value of x. ठीक है, कोई भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू डाल दो, right? You get the value of x is equal to 1. मैंने इस वाली इक्वेशन में डाला है 12x minus 3y is equal to 9. So you get x is equal to 1. Now next step क्या है आपका? Add 1 1. You x is equal to 1, y is equal to 1. Also you have to find the second order derivative, delta square c by delta x square, right? हमें तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ठीक है। हमें इसको फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 12, राइट? इसको हम a मान लेंगे, जो हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट? दैट इज, इसको हम a मानते हैं, a मान रहे हैं। नाउ delta square c by delta x into delta y, right? हमारा जो ये है, ठीक है, this is, it is, right? delta square c by delta x into delta y, इसको हम with respect to x इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, we will be left with -3. इसको हम b मानते हैं, b। फिर हमारा आया डेल्टा स्क्वायर सी बाई डेल्टा वाई स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारा बचेगा 10। इसको हम सी मान रहे हैं, सपोज दिस इज सी। क्यों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें इसको, वी हैव टू एज्यूम दिस एज ए, दिस इज एज बी एंड दिस इज एज सी, बिकॉज हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको AC माइनस बी स्क्वायर निकालना है। AC माइनस बी स्क्वायर, आपको ये याद रखना पड़ेगा, AC माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम आगे बढ़ेंगे निकालने के लिए कि ये मिनिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारा टोटल कॉस्ट, राइट? AC माइनस बी स्क्वायर, A हमारा क्या आया था 12, C हमारा क्या था 10, 12 into 10 minus B square minus 3 square, that comes out to be 120 minus 9 square, that comes out to 111, that is greater than 0. So solution exists over here. Solution exist करता है तो हम आगे बढ़ेंगे। Now again आपको ये निकालना है A से माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद आपको A की वैल्यू देखनी है। A की वैल्यू, अगर A की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, राइट, तो ये मिनिमम है, then it is a minimum, the total cost is minimized, right? And you see that A is equal to 12, and you also see that 12 is greater than 0, so we conclude that the cost is minimum. Cost minimum कब है? जब हमारा x1 है और जब हमारा y1 है, and therefore जो हमारा cost function दिया हुआ था 6x square plus
सॉरी माइनस 9x माइनस 3xy माइनस 7y प्लस 5y वाई स्क्वायर प्लस 120। यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ पे आप 1 वैल्यू डालो, जहाँ भी y है वहाँ पे भी आप 1 वैल्यू डालो, एंड यू फाइंड that you get the value of total cost is equal to 12. So our total cost is minimum at values x is equal to 1 and y is equal to 1, and the minimum total cost is equal to 12. So you have to proceed in this way in all the questions. So what are the steps? First you will differentiate with respect to x, then with respect to y, whatever the variables may be, right? That you have to, whatever the two variables may be, right? Then you have to put that equal to 0. You have to get the values, right? Then you again have to differentiate. You have to assume that this is a, this is b, and this is c. You have to find out ac minus b square. You have to see the value, whether it is the value of a is greater than 0, then minimum. If it is more than 0, then it is maximum, right? The demand function and the total cost function of a monopolist are as follows. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है. डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू 100 माइनस 3q प्लस 4 a टू द पावर हाफ दिया हुआ है और कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है. q क्या है? क्वांटिटी है. और a क्या है? लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. आपको वैल्यूज पता करनी है a, p एंड q टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ये क्वेश्चन आया हुआ है DU BCom ऑनर्स 2005 एंड 2008 में. प्रॉफिट, सबसे पहले आपको देखना प्रॉफिट होता क्या है. प्रॉफिट क्या है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट. प्रॉफिट क्या है हमारा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ठीक है. बट हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है नहीं यहाँ पर. बट वी आर गिवन द डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू 100 माइनस 3q प्लस 3q माइनस 4 a टू द पावर हाफ. इसको हम अगर q से मल्टीप्लाई कर दे प्राइस और क्वांटिटी तो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा. लेट अस डू दैट टू फाइंड आउट द रेवेन्यू फंक्शन. r इज इक्वल टू pq, right? 100 minus 3q plus 4a to the power half multiplied into q. You get this 100q minus 3q square plus 4q a to the power half. प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए आप रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करोगे, राइट? यू सिंप्लीफाई दिस. Take out this out of the bracket. Now you simplify 100q minus 10q. You get as 90q. This is minus 3q square minus 4q square. You get as minus 7q square. You get this as same over here and minus a as same over here. Now your next step is to find the partial derivatives. Partial derivatives with respect to q and with respect to a. With respect to a, right? Okay. Now we find out the partial derivatives. This will be 90 minus 14q plus 4 under root a, right? With respect to a, we just have a over here, so this will be 4 into half the power of a, then q a to the power minus half and minus 1, and this is a आपका -1 हो जाता है. Your result is, आप इसको कैंसिल करते हो 2, ये 2 बन जाता है, तो this comes out to 2q a to the power minus half minus 1. अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाला है और आपको a और q की वैल्यूज चाहिए, तो आपको इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, राइट? वी हैव डन दिस in order to get the values of the unknowns, that is a and q. Now see 2qa minus half minus 1, this we have written over here. This can also be written in this way. 2q a to the power minus half ऊपर है, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो अंडर रूट a हो जाएगा. This is equal to 1 और आपका अंडर रूट जो a है that becomes equal to 2q. ठीक है.
हमें एक इक्वेशन से अंडर रूट ए की वैल्यू पता चली है, इसी चीज को हम दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 90 माइनस 14q प्लस 4 अंडर रूट ए, और हमें अंडर रूट की वैल्यू पता है। ठीक है, हमने यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू में जो हमारा वैल्यू यहाँ पे 2q आया उसको हमने यहाँ डाला। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 90 माइनस 14q प्लस 8q इज इक्वल टू 0। this becomes minus 6q, so it is 90 is equal to 6q। q की वैल्यू हमारी आती है 15। we got the value of q is equal to 15, right? अब a की वैल्यू आप निकालते हो, you get the value of a is equal to 900। हमारे पास q की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें डबल डिफरेंशिएट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। विद रिस्पेक्ट टू q हम फाइंड आउट करेंगे, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ -14 बचेगा, राइट? नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू q, राइट? we will be left with 2 by under root a। okay, now this again we have to differentiate this with respect to a, then we will be left with minus q a to the power minus 3 by 2, राइट? नाउ आप इसको a मानोगे, इसको b मानोगे और इसको c मानोगे। आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि एट q इज इक्वल टू 15 और a इज इक्वल टू 900, a की वैल्यू आपके -14 है, b की वैल्यू आप निकाल लो a की वैल्यू पुट करके। ठीक है, दैट वो आपका आता है 1/15। c की वैल्यू जो है आप अगेन यहाँ पे q और a की वैल्यूज डालो, put the values, you will get as -1/1800, right? Now you calculate AC minus B square, AC minus B square, it's over here, right? Now if you put the values, AC की कितनी, A की वैल्यू कितनी है -14, right? C की वैल्यू हमारे पास है -1/1800, B square हो जाएगा 1/15 square। If you simplify this, you will get the value as 1/300, that is more than 0। और आपको अगर ये मोर देन 0 है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आगे प्रोसीड करोगे आप, और आप देखोगे कि a की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैक्सिमाइज के लिए a की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो a की वैल्यू -14 है, ये नेगेटिव है, तो द प्रॉफिट इज बीइंग मैक्सिमाइज्ड, राइट? This is a question of discriminating monopoly। discriminating monopoly मतलब एक मोनोपोलिस्ट है जो दो मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट को दो मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पे बेच रहा है। इसका मतलब उसके पास दो डिमांड फंक्शन है मगर उसके पास एक ही कॉस्ट फंक्शन एक है उसके पास, राइट? और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कि वो क्या प्राइस चार्ज करेगा दोनों मार्केट में, दैट हिज प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, राइट? पहला डिमांड फंक्शन मार्केट 1 का क्या है, x1 इज इक्वल टू 21 माइनस 0.1 p1 एंड x2 इज इक्वल टू 50 माइनस 0.4 p2। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा होगा, एक मार्केट का सिचुएशन दिया हुआ है, उसको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और उसकी डिमांड फंक्शन दी हुई है, बट यहाँ पर दो मार्केट है और दोनों मार्केट के अलग अलग डिमांड फंक्शंस हैं, राइट? और कॉस्ट फंक्शन एक है। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है, 10x प्लस 2000। ठीक है, प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना है तो हमें रेवेन्यू फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मान लेते हैं रेवेन्यू 1 है, मार्केट 1 का, रेवेन्यू 2 है मार्केट 2 का। रेवेन्यू 1 को निकालने के लिए हम P1 और X1 को मल्टीप्लाई करेंगे। X1 हमारे पास दिया हुआ है और X2 भी हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम P1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दिस इज माय X1। What we get is 21 P1 minus 0.1 P1 square। We do the similar thing for R2, that is revenue in the second market, P2 into X2।
x2 क्या है हमारे पास 50 माइनस 0.4 p2, इसको हम p2 से मल्टीप्लाई करते हैं, we get 50 p2 माइनस 0.4 p2 स्क्वायर। टोटल कॉस्ट क्या है 10x प्लस 2000। x जो है टोटल क्वांटिटी इन बोथ द मार्केट्स है, तो हम इस x को x1 प्लस x2 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मार्केट 1 एंड मार्केट 2 की क्वांटिटीज, राइट। ये मार्केट 2 की हो गई। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 10 ब्रैकेट्स में x1 प्लस x2 प्लस 2000। नाउ x1 की जो वैल्यू है हम यहाँ पे लिख देते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, और x2 की वैल्यू वी राइट इन दिस वे। हम अंदर ब्रैकेट्स को यहाँ पे खोलते हैं, we get as 21 minus 0.1 p1 plus 50 minus 0.4 p2, right, into whole 10 plus 2000. This is 21 plus 50 71 हो गया, 0.1 p1 0.1 p1 हो गया, 0.4 p2 4 p2 हो गया plus 2000. We multiply by 10 what is there in the bracket, we get this plus 2000. The final total cost is 2710 minus p1 minus 4 p2. This is the total cost. Total cost हमारा निकल गया, ठीक है। Now total revenue क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2, तो हमारे टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। प्रॉफिट फंक्शन निकालना है हमको, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट को हम कैपिटल पी से डिनोट कर रहे हैं, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू में ना मेरा R1 प्लस R2 हो जाएगा। वैल्यूज को आप यहाँ पे लिख दो, R1 की जो वैल्यू है राइट इट ओवर हियर, R2 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई, व्हाट वी हैव गॉट वी हैव टेकन आउट, राइट इट ओवर हियर, एंड जो हमने अभी निकाला टोटल कॉस्ट, राइट इट ओवर हियर। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस you will get the values as this is 21 p1, this is p1, 22 p1, right, this is 50 p2, like terms को आप ऑपरेट करो, 54 p2 minus 0.1 p square minus 0.1 p square minus 0.4 p2 square p2 square minus 2710 minus 2710, okay। प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले हम इनको पार्शियल डेरिवेटिव्स इनका निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू p1 और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू p2, और इनको फिर हम 0 के बराबर पुट करेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू p1, व्हाट वी गेट, दिस 22 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0.2 p1 हो जाएगा, और ये बचे ये सारे 0 हो जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू p2 जब हम करते हैं तो p1 सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, p2 जो बचा ये 54 हो गया यहाँ पे, और ये हमारा ये बन गया 0.8 p2, पुट देम इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने इनको 0 के बराबर पुट कर दिया, तो यहाँ से हमें p1 की वैल्यू जो आई 110 आई, राइट। डेल्टा p बाई डेल्टा p2, इसको भी मैंने 0 के बराबर पुट किया, ठीक है। जो हमारी p2 की वैल्यू आई वो 67.5 आई, मतलब मार्केट 1 की जो प्राइस है, जो प्राइस चार्ज कर रहा है वो 110 रुपये है, ठीक है, और मार्केट 2 में जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो 67.5 है, ठीक है। क्वेश्चन में आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि जिस मार्केट में वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है मार्केट 1 में, उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मोनोपोलिस्ट है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी कम है तो मोनोपोलिस्ट जो है मार्केट 1 में कंज्यूमर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर पा रहा है, राइट, बिकॉज इट इज लोअर प्राइस इलास्टिसिटी। यही चीज़ आपको प्रूव करनी है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट, राइट, कि आपको दोनों मार्केट की इलास्टिसिटीज पता करनी है और ये प्रूव करना है कि जिस मार्केट में ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा रहा है उस मार्केट की प्राइस इलास्टिसिटी कम है, राइट। विल वी सी दैट एट द एंड। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे आ जाते हैं। हम यहाँ तक हमने देखा
P1 और P2 को वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। नाउ we also calculate this double differentiation, the second order partial derivative with respect to P1. यहाँ पर हमारा -0.2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, with respect to P1, ठीक है। तो यहाँ पे P1 कुछ है नहीं, तो that becomes 0. with respect to P2 अगेन हम इसको करेंगे तो ये -0.8 आ जाएगा, दिस इज माई -0.8. अब आपकी जो प्राइसेस आई है, इस प्राइस पर 110 और 67.5 में ए की वैल्यू क्या है, इसको हम ए मानेंगे, यू ऑल नो द सेम स्टेप्स फॉलोज ओवर हियर, इसको हम बी मानेंगे और इसको हम सी मानेंगे, राइट। ए की वैल्यू मेरी 0.2 है, -0.2 है, बी की वैल्यू मेरी 0 है और सी की वैल्यू मेरी -0.8 है। फिर आपको ये देखना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए आप ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप, -0.2 into -0.8 and -0, that comes out to be 0.16, which is greater than 0, so your solution exists over here. और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना तो फिर से आपको ए की वैल्यू देखनी पड़ेगी, ए की वैल्यू माइनस है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमम है, इन प्राइसेस पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, राइट। Now we have to see elasticity देखना है हमें, we have to now show that elasticity in the market 1, price elasticity in the market 1 is less than the price elasticity in the market 2. मतलब जिस मार्केट में हायर प्राइस है उसकी प्राइस इलास्टिसिटी लोअर है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मार्केट 1 की इलास्टिसिटी हम निकाल रहे हैं -P1/x1 into delta x1 by delta P1, ठीक है। कम हियर यू सी x1 जो है हमारे पास स्टार्टिंग में एक फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है, 21 - 0.1 P1 है, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए डेल्टा x1 by डेल्टा P1, तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डेल्टा x1 by डेल्टा P1 we get -0.1, x2 जो दिया हुआ था 50 - 0.4 P2, इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू P2 कर रहे हैं तो हमारे पास आया 0.4. P1 प्राइस वी हैव गॉट 110, ठीक है। x1 जो है हमारे पास 21 - 0.1 P1 है और ये जो वैल्यू आई है डेल्टा x1 -0.1 आई है, आप P1 की जगह पे 110 डालो, राइट, और यहाँ पे 0.1, you get the value as 11/10, that comes out to be 1.1, right. Now you find the elasticity in the second market, right, same steps you follow. P2 जो है 67.5 है, वो डालो यहाँ पर आप, और x2 की जो x2 है जो हमारा फंक्शन दिया होता है 50 - 0.4 P2 में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, यहाँ पे P2 कितना है 67.5, you put the value over here and delta x2 by delta P2 you got -0.5, if you put it over here you get this as 27/23, right. So you see that जो elasticity है मार्केट 1 में जहाँ पे हायर प्राइस चार्ज किया जा रहा है, वहां पर elasticity is there, जहाँ पे हायर प्राइस चार्ज किया जा रहा है कम है, राइट, this will be less, sorry for the sign, this will be less in this market, and this is the end of partial derivative. Please solve the questions from your book. Thank you.